अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिबलिंग रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी सुंबल चौधरी। जी। तो वी होप्स हो कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसका नेम है, आज जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल है द ग्रेट इंडियन ब्रेन ड्रेन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है नेम से ही। आपने वीडियो पूरी देखनी है हमारे साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। A few weeks back, an Indian-born techie replaced Jack Dorsey as the CEO of Twitter. Around the same time, an Indian-born economist was promoted as the first deputy managing director of the IMF. They've both added their names to a growing list of Indians serving at the very top of prominent global organizations. Many Indians celebrated their achievements. Many others debated them. How does this success help India? Do these individuals build brand India, or do they represent lost Indian talent? Let me show you some figures. Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. It accounts for a cosmic 65% of the global share, way ahead of China and the Philippines. For the second most populous country in the world, exporting talent, something that it has in abundance, should not really be such a big deal. After all, Vasudhaiv Kutumbakam, the world is one family, has been an ancient tenet of Indian philosophy. And yet we must ask, is this limiting the innovative capacity of India? Is it hurting our economic growth? Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay. In the 1970s, long before globalization became common currency, brain drain used to be the buzzword in India. What is brain drain? The loss of human capital. An expression that refers to the flight of skilled labor from developing countries to the developed world. Why does this happen? Mostly due to conflict, political instability, lack of opportunity, or health concerns. The converse is called brain gain, which simply means large-scale immigration of skilled labor. For decades, the West has benefited from brain gain. During the 1970s, many young Indians graduated from elite and subsidized public institutions only to find that jobs in India were not really financially attractive. So they started leaving the country to make the most of their degrees and skills to get better rewards for their effort and talent. And unlike short-term contract workers to Gulf nations, most of these Indians never returned. They ended up as prominent bankers, entrepreneurs, innovators, and scholars abroad. This was at a time when India needed such professionals the most. It was still a poor post-colonial country, and the exodus of its best and brightest is said to have diminished India's growth prospects. The economic liberalization of 1991 changed things. Higher education institutions cropped up, as did several multinational companies. Foreign investments began flowing in, as did long-departed Indians. Some even say that the economic bonanza of the 1990s was largely due to this return of the Indian diaspora. Indians who had left India came back along with capital, information, ideas, and networks, and all of this powered the economic boom. But the trend lasted only for a few years. The figures tell you the story. In 1990, 7 million Indians were living and working outside India. As of 2017, the figure has risen to 17 million. What does this tell you? That India's problem of brain drain still persists. According to one estimate, more than half of the first rankers in class 10th and 12th board exams between 1996 and 2015 migrated abroad. They're still employed overseas, mostly in the United States, the best and the brightest of Indian minds living in and working for another country. This is brain drain 2.0. What explains this? An easy answer could be money. They say brains go where the money is. Others say brains go where brains are. Brains go where they're valued. And that is not to say that money does not play a role. It does. Look at wages in the context of purchasing power parity. Compare the average wage in America versus that in India. In academics, you earn 6 times in America compared to what you earn in India. In the IT sector, more than double. In management, more than 3 times. So clearly, money is a factor. Then you have education, quality of life, social security, gender equality, health benefits, a whole lot of things. If you talk about education, India has come a long way.
It has ensured that almost every child goes to primary school, and that's no mean feat. But higher education is still a challenge. We have some stellar institutions like the IITs and the IIMs, but none of them appear in the list of top global universities. A lot of good colleges in India also have skyrocketing cutoffs. So students leave to study abroad to land better paying jobs. And these are expensive degrees, but they attract hundreds of thousands of Indian students. Then we have social security and quality of life, better roads, hospitals, schools. Take Canada, for instance. In 2016, the number of Indians who became permanent residents of Canada was 39,000. In 2019, that figure jumped to over 80,000. That's an increase of more than 105%. Next comes gender equality, a neglected dimension of brain drain. In 2021, the gender gap in India widened to 62.5%. There aren't enough women in technical and leadership roles, and this stems from gender disparities in education, labor force participation, and income levels. The entire system, you could say. And this makes a lot of highly skilled women shift abroad with no intention to return. A lot of young people also go because they want to experience life outside India. They want to see the world. Many of them get used to what they see and experience and don't return. Many others return because they don't feel at home, or just the bother of tracking changing visa rules is too much for them. For a lot of people, the tag of being an NRI is a badge of honor. Call it a colonial hangover, call it the gift of Bollywood and their portrayal of NRIs. For many Indians, the idea of living abroad is glamorous. So there is no one reason for leaving and not returning, or for leaving and returning. And we may disagree with many of these reasons for leaving India, but that will not change the fact that people are leaving. And at what cost? We end up contributing more to our host country than to our home country. A lot of skilled Indian emigrants got subsidized education. They went to schools and colleges with more than 90% subsidy. Who benefits from this subsidy? Other countries, not India. According to the Associated Chambers of Commerce and Industry, Indian students studying abroad cost India as much as $17 billion a year in lost revenues. When they leave India, they're in the most productive phase of their lives. By the time they return, that is assuming that they do return, they're often a spent force with ideas and skills that are no longer required. Now, this apparently leads to reduced economic growth, limited innovative capacities of the nation, and lack of skilled manpower. I have some more figures to show you. According to the US National Center for Biotechnology Information, NCBI, India is the world's biggest exporter of doctors. And this is a disturbing statistic. There is one Indian doctor in the US for every 1,325 Americans, but there's one Indian doctor in India for more than 2,400 Indians. India is losing its doctors, engineers, and entrepreneurs to other countries. It's losing much of its skilled human capital to other countries. There is an urgent need to understand what is driving this trend and reverse it. Why is it that rich families with roaring businesses want to acquire investor green cards? Why does an IT employee pray night and day to earn that H-1B visa? Why does an Indian student want to go abroad directly after school? Why do Indian-born innovators disassociate themselves from their birthplace? These are uncomfortable yet important questions. Questions that we need to address as a country. Questions that we need to answer on all levels. If we want to end the great Indian brain drain, if we want to stop non-residential Indians from becoming non-returning Indians. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और इसमें जो फैक्ट्स थे वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। एक तो आज ही हमें पता चला कि इंडिया जो माइग्रेशन में दुनिया में नंबर 1 पे है, कि सबसे ज़्यादा जो लोग माइग्रेट करते हैं, अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, वो इंडिया के हैं। तो इसकी बहुत सारी उन्होंने वजूहत बताई। कुछ तो बताएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो है मुल्क से बाहर जाते हैं, और कुछ बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपने जो है वो जॉब्स के लिए जाते हैं। और जॉब्स की भी कोई एक रीज़न नहीं है, मनी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि मनी भी एक रीज़न होती है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी और जेंडर इक्वालिटी, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वो बाहर रहने को तरजीह देते हैं। और इन्हीं फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो 2016 में बता रहे थे कि 6 लाख लोग जो हैं वो गए थे, उन्होंने अपनी सिटीज़नशिप जो है वो छोड़ दी थी। और फिर बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग वापस भी आए, कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं रह गए और दोबारा वापस नहीं आए। लेकिन फिर बीच में कुछ टाइम लोग वापस आए, लेकिन फिर वो ट्रेंड चेंज हो गया, फिर लोग दोबारा से जो है वो गए, तो फिर वो वापस नहीं आए। हाँ, वो बता रहे थे कि 1991 में वो उन्होंने दिखाया था कि कुछ बिल वगैरह पास हुए थे, तो बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे
वहाँ से इंडस्ट्री भी लगी थी, काफ़ी बूस्ट हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली फिर से वही ब्रेन ड्रेन वाला काम स्टार्ट हो गया। अब ये एशियन कंट्रीज़ में यही ज़्यादा है, पाकिस्तान में हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के यहाँ पे के जो लोग हैं वो ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं और वो जो है फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। अमेरिकन हो गए, एक फिगर वो बता रहे थे अमेरिका में जो एक डॉक्टर है 1300 लोगों के लिए है, जबकि इंडिया में वही एक डॉक्टर है वो 2300 लोगों के लिए। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये इशू है, जॉब्स का इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इन वजह से लोग जो है ना वो बाहर जाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और बाहर की कंट्रीज़ का जो है वो ब्रेन गेन हो रहा है, तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो। अगर हम कंपैरिजन करते हैं यूएस से, तो एकेडमिक में 6 टाइम्स जो है वो हायर है, और इसके अलावा आईटी सेक्टर में 2 टाइम्स और मैनेजमेंट में 3 टाइम्स। तो ये भी बहुत बड़ी वजूहात है लोगों की जो है वो अपना मुल्क छोड़ने की। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारा बताया कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ ग्लैमर ऐड करें, कुछ मतलब कोई एक रीज़न नहीं है, किसी की कोई रीज़न है तो किसी की कोई रीज़न है, तो उसकी वजह से इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2016 में 39,000 जो लोग थे उन्होंने कनाडा की शहरियत ले ली, और 2019 में जो है 80,000। जी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आप लोग अपनी कंट्री में ही जो है वो पढ़ रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप यहीं पे जॉब करें, आप बाहर मत जाएं। एशियन कंट्रीज़ के लोग स्पेशली ऐसा करते हैं कि 2 नंबर तरीक़ों से भी जाते हैं, वो डंकी लगाना कहते हैं, लोग बहुत से मर भी जाते हैं। तो ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुल्क में, आपने स्टडी अगर वहाँ की है तो फिर उस मुल्क को सर्व करें, उस मुल्क को छोड़ के सैलरी की वजह से या किसी और वजह से दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे जो ब्रेन है उनका यूज़ होगा इन कंट्रीज़ में, तो ये कंट्रीज़ भी आगे जाएंगी। ठीक है, जो एशियन कंट्रीज़ का टैलेंट है वो बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और एशियन कंट्रीज़ ग्रो ही नहीं हो रही इसी वजह से, क्योंकि जो सबसे बेहतरीन लोग हैं इंडिया के, अब टॉप के जो CEO हैं दुनिया के, इंडिया के ही लोग हैं। वो ट्विटर में, गूगल में, कहीं भी आप उठा लें, इंडिया का ही CEO बैठा हुआ है। तो टैलेंट तो इंडिया में है, लेकिन अब पता नहीं क्यों लोग जा रहे हैं, क्या रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है या बहुत बड़ा मुल्क है उसमें इस इश्यूज़ की वजह से है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। सैलरीज और सिक्योरिटी वगैरह और बेटर रोड्स, बेटर वहाँ पे एजुकेशन के मौके, तो फिर वो उनको यही होता है कि वहाँ पे जाके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करें। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की और वीडियो आप देखना चाहें तो रिकमेंडेशन दे दिया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के अकाउंट का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप मैसेज में अपनी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।